I'm going to share my screen. Tell me once it's visible, okay? Yes. I will receive. Okay. Okay. So good evening. As discussed, we are going to resume from where we had left off last time. Okay. That is, we had started with unit number 4 and we are going to continue with the यूनिट नंबर 4. हमने हाफ फिनिश किया था, जो हाफ पेंडिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे. अभी मुझे Okay. याद नहीं है कि हमने लिसनिंग एक्सरसाइज किया था कि नहीं किया था उस टाइम पे, बट विल डू इट अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. Sure. So in this exercise basically you are going to listen to 4 people who are in a TV game show. Okay, if you remember, unit 4 was about talking about likes and dislikes, correct, where we talk about our likes, dislikes using simple present tense. And then we talked about different genres also, genres of movies, series, music, right? So that's what we had discussed in this particular unit. And as I said, we are going to listen to 4 people who are on a TV game show. Okay, now there are 3 men whom you can see on the screen also, that is Bill, John and Tony. They want to invite Linda on a date. Okay, so you have to note down their likes and dislikes that they will be talking about, mainly in music, movies and TV programs. Okay, and depending on their likes and dislikes, you have to suggest who is the best choice for Linda to go on a date. Okay, Okay. so I'm going to play the conversation. Pay attention. Unit 4. Is it audible? No. I really like hip hop. Page No, it's not audible. No. Okay, maybe there is some issue. 1 second. Page 22. Exercise 1. Snapshot. List. Is it audible now or no? No. Okay, wait a minute. I think there is some issue with the Google Meet then. Just 1 second. Listen and number the musical styles from 1 to. Is it audible now? Yes. Okay, 1 second. Page Okay, as I said, I'm going to play the conversation now. 25, Exercise 7. Listening. Who's my date? Part A. Listen to 4 people on a TV game show. 3 men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? Complete the chart. Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question. On music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical. Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay. Now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like action movies. And how about you, John? Oh, I like musicals. And how about you, Tony? I love horror movies. And what about you, Linda? I really like horror movies too. And now for question number 3. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch reality shows. John? Well, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows.
Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, did you get all the answers? Yes. Okay, just 1 second. One second, I'm going to reshare the screen. Okay, there's some issue. Okay, tell me the answers. So, directly I can jump on dating or You what? can tell me the answers first Okay. for the table, and then you can tell me who is the best date for Okay. the for So Linda. for Bill, music is classical, Mm-hmm. movies are action, TV programs are reality show. Reality shows. Okay. Yeah, reality shows. Hmm. For John, music is jazz, Mm-hmm. movies are musical, Mm-hmm. and TV programs are talk shows. Okay. Okay. For Tony, musical it's rock, movies it's horror, and for TV programs game shows. Okay. Okay. Then for Linda, musical it's pop, movies it's horror, Mm-hmm. and for TV program it's talk or game shows both. Okay. Yeah. So according to you, who is the best date for Linda? Tony. Tony is the best date for Linda. Very good. Why? Because they have similar interests. Correct. Similarly, Most right. of the things are similar, we can say. Yeah. Yeah. Very good. You got it. Now, moving to the next part over here, we have a conversation as usual. We are going to first read the conversation like every time, but while we listen or while we read the conversation, what I want you to focus on the way they are making the sentences with would you like to. ओके, वुड यू लाइक टू यूज़ करके वो सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं ये आपको ऑब्जर्व करना है. वो कैसे हम यूज़ करते हैं एंड क्यों हम यूज़ करते हैं वो हम देखने वाले हैं. बट एज द टाइटल सेज, ही इज़ ट्राइंग टू इनवाइट. ओके, डेव इज़ ट्राइंग टू इनवाइट सूजन. सो मोस्टली वुड यू लाइक टू ये हम इनविटेशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, क्यों और कैसे वो हम आगे देखेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज एज ऑफ नाउ. आई वॉन्ट यू टू रीड द कॉन्वर्जेशन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. वी हैव डेव एंड सूजन. सूजन, ओके. So, okay. Okay. Should I start? Yes, please. Okay. So, Dave, I have tickets to the soccer match Mm-hmm. on Friday night. Would you like to go? Sujan, correct? Very It's good, correct. okay. Thanks. I would love to. What time does it start? Dave, it at 8. Susan, that sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Mm-hmm. 6 o'clock सिक्स. or अभी के लिए 6? 6, यहाँ पर 6 लिखा है तो Okay, 6 ही बोलिए आप. okay, okay. Dave, uh, I would like to, but I have to work late. Mm-hmm. Susan, oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Very good. Dave, okay. Why don't we meet at the gate? Susan, that sounds fine. See you there. ओके, वेरी गुड. बट अभी जब नेक्स्ट टाइम हम जब भी कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे यू विल ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन दी इंटोनेशंस. ओके, क्वेश्चंस क्वेश्चंस जैसे साउंड करने चाहिए. क्लियर. Okay. सो डू यू वांट टू हैव डिनर एट 6? सो डू यू वांट टू हैव डिनर एट 6? तो क्वेश्चन है ना वो, तो इंटोनेशन ऊपर जा रहा है. डू यू वांट टू हैव डिनर एट 6, तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहे हो आप करके. Then that's okay. Let's just meet at the gate. Let us just meet at the stadium before the match around 7:30. तो 7:30 पे इंटोनेशन नीचे जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि वहाँ पर सेंटेंस
एंड हो गया. ओके, Okay. दैट साउंड्स फाइन. सी यू देयर. ओके, अभी जब मैं प्ले करूंगी तभी भी आप फोकस करिएगा इंटोनेशंस कैसे थे. क्लियर? द कॉन्वर्जेशन इज प्रीटी सिंपल. एनी क्वेश्चंस? डू यू नो व्हाट इज सॉकर मैच? हाँ, वो लेके भागते हैं ना। नहीं, सॉकर वो आप बेसबॉल बोल रहे हो शायद. अच्छा अच्छा। सॉकर इज as same as football. यस Okay, यस just the words change again. Okay, British यस। English, American English, वही है. ठीक है. बाकी तो जैसे मैंने बोला, वुड यू लाइक टू वाला हम देखेंगे कि वो कैसे यूज करना है हमें. डोंट वरी अबाउट दैट एज ऑफ नाउ. आई प्ले द कॉन्वर्जेशन नाउ along with the sentences. Focus on the intonations as well. ठीक है. इंटोनेशन, राइट? इंटोनेशन, जो हमारा पिच ऊपर नीचे जाता है, एंड जो हमारे पॉजेज आते हैं जहाँ पर समझ में आता है कि सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हुआ है. ओके. I don't know if you watch English series or not, but recently you might know Stranger Things का last season आया था, right? तो इसका Stranger Things का last season आया हाँ था. आया है ना नेटफ्लिक्स पे. या, तो या उसमें जो फेमस विलन है, he is quite famous now because of course his appearance in the show, but also because of his uh, साउंड ऑल्सो. जो उसने विलन का साउंड किया है वो उसने खुद साउंड इफेक्ट दिया है, मतलब खुद उसने वॉइस ओवर किया है उसका. एंड ऑफ कोर्स ही हैज एक्टेड ऑल्सो हिमसेल्फ. तो उसके अगर आप कॉन्वर्जेशंस देखते हो ना, लाइक उसके अभी बहुत सारे इंटरव्यूज आए हैं टॉक शोज पे वगैरह. So if you see the way he talks, the way he takes pauses, so if you remember I had said at the start also that while speaking it's not important कि आप बोलते हैं ना फुल क्या बोलते हैं, फुल फॉर हाँ, फुल फुल स्टॉप. फोर्स में आप जाकर, मतलब फास्ट ट्रेन पकड़ के हमें सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं. दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ओवर हियर. टेकिंग दोज पॉजेज, यूजिंग दोज इंटोनेशंस. समटाइम्स हमको लगता है, बहुत बार हम बोलते हैं कि फिलर्स नहीं यूज़ करने हैं, बट व्हेन यू टॉक विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशंस, जब फिलर्स जैसे कि भी यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं जाता है. सो व्हेन आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ हिज इंटरव्यू, दैट इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड. ही वाज आल्सो यूजिंग बट दे वर नेचुरल पॉजेस, लाइक नेचुरल फिलर्स. तो लगता भी नहीं है कि वो फिलर्स यूज़ कर रहे करके, राइट? सो maybe listen to his one or two interviews, you'll understand what I'm trying to say. So pauses भी बहुत important रहते हैं. So for example, oh I would like to, but I have to work late. तो like to के बाद में एक छोटा सा pause आ गया वहाँ पर, राइट? अभी बहुत बड़ा सेंटेंस है समझो. जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा, लेट अस जस्ट मीट एट द स्टेडियम बिफोर द मैच अराउंड 7:30. सो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है ना, लेट अस जस्ट मीट एट द स्टेडियम बिफोर द मैच. तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम. लेट अस जस्ट मीट एट द स्टेडियम बिफोर द मैच अराउंड 7:30, राइट? तो हमने, अभी मैंने बहुत छोटा पॉज लिया, पर थोड़ा लंबा पॉज भी आप ले सकते हो वहाँ पर. ओके, दैट्स व्हाट हेल्प्स अस टू साउंड बेटर. बहुत लोग, मैंने पहले भी बोला, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि फ्लुएंसी मीन्स टॉकिंग फास्ट. करेक्ट. फ्लुएंसी डज नॉट इक्वल टू टॉकिंग फास्ट in English. Fluency means talking properly with a proper pace. Okay, proper pace depends from person to person, depends from sentence to sentence as well. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंटेंट वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स हमारे रहते हैं, जो हम आगे हमारे कल या फिर परसों वाले सेशन में भी देखेंगे, जो मैं वॉइस एंड एक्सेंट का सेशन लूँगी तब, कि हम जो हमारे कंटेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि हमें मेन पार्ट बताते हैं, जो कि हमारे वर्ब्स रहते हैं, एडजेक्टिव्स रहते हैं, नाउन्स रहते हैं, ये हमें मेन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सेंटेंस पे, तो उन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देंगे. फिर जो हमारे फंक्शन वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि टू आ गया, एट आ गया, डू आ गया, ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है ना, उनको हम सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट साउंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो दीज आर फंक्शन वर्ड्स, दे आर जस्ट देयर टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो उन पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. So again that also becomes important along with the intonations, along with the pronunciations. Okay, so I'll share if possible, but you can also just go and search Jamie बावी करके उसका नाम है, कैम्बल बावी. तो जस्ट सर्च फॉर हिज इंटरव्यूज, वेकना करके भी आप सर्च कर दो, मिल जाएगा आपको. चलेगा. या अभी रिसेंट में भी आया, मैंने नहीं सुने उसके रिसेंट वाले, मैंने थोड़े पुराने वाले सुने. जस्ट लिसन टू how he talks, you'll understand what I'm trying to say. Okay, yeah, I'll play the conversation, pay attention now. You Just one second. complete
Love horror movies. Page 25, Exercise 8, Conversation. Okay, pay attention. An invitation. Part A. Listen and practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay, did you observe? Yeah. Yeah. Okay, now I'll play the second part of the conversation where we just have to listen. Here you have to listen to Dave and Susan. Again, they are at the soccer match now. Now you have to focus on the conversation. At the end of it, you have to tell me which team does each person like. Okay, हर एक person को कौन सी team पसंद है basically. Yeah. Page 25, Exercise 8, Part B. Listen to Dave and Susan at the soccer match. Which team does each person like? Yes! That's another goal for the Ducks. That's the Ducks 3, the Frogs 0. You really are a Ducks fan, Dave. I know. They're my favorite team. They're okay, but I like the Frogs a lot better, especially Mario Sanchez. He is very talented. It's too bad he's not playing today. Page 26. Okay, which team does each person like? So Dave likes Ducks team. Mm-hmm. Susan likes Frogs. Frogs, very good. तो ये local teams है तो उस वजह से थोड़े से uncommon names है. Okay. But you got the answers and they were grammatically correct also. Very good. Okay, now as I said, in this part we'll be looking at how to use the sentences or how to frame the sentences using would you like to. अभी would you like to हम सबसे पहले use करते हैं to talk about to invite someone somewhere. Okay, for example अगर मुझे पूछना है would you like to have coffee. आप ऑफिस में हो, you're going for your coffee break and you want to ask your colleague by saying would you like to have a coffee or would you like to go for a coffee. Okay, then the person might just say I would love to or I would like to, or he would just say yes thanks. Okay, now हम सेम सेंटेंस डू यू वांट टू करके भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं by saying do you want to go for a coffee, okay, or do you want to have coffee. But do you want to वाले जो हमारे सेंटेंस है वो काइंड ऑफ थोड़े से इनफॉर्मल हो जाते हैं, समटाइम्स इट कैन कम आउट एज रूड ऑल्सो. Okay, when we are in a formal setting we want to sound formal, right? That is where we use would you like to. Now I usually give this example in class that imagine अभी आप imagine करो, okay, because you're married. Imagine you're asking a girl out, okay, or you're asking your wife if she wants to go out. So you can just say do you want to go for dinner. But और ज़्यादा आपको अगर formal और polite sound करना है, that's very important, polite sound करना है, then you will say would you like to go for dinner today. Okay, so that becomes your polite sentence. थोड़ा सा जो हमारा डू यू वांट टू वाले सेंटेंसेस है वो इम्पोलाइट हो जाता है, especially when you are trying to meet someone for the first time or you're trying to make an impression. Now as I said, when you're trying to answer, if it's these are basically your yes and no questions, right? So if you want to say yes, you will just say yes I would or yes I would love to, thanks. But if you want to say no, that's where it becomes important. अभी इमेजिन आप किसी को बाहर जाने के लिए पूछ रहे हो, तो वो पर्सन अगर नो बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, राइट? बुरा लगेगा. सो दैट्स वेयर वी डोंट यूज द वर्ड नो डायरेक्टली. ओके, वी से आई वुड लाइक टू बट and then give our reason.
सो अगेन यू आर ऑल्सो ऑन अ मैनेजरल पोजिशन, तो यू नो ऑलरेडी कि हम Right. जब भी कस्टमर से बात करते हैं, इट्स अ वेरी बिग एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस कि हम कस्टमर को कभी भी ना नहीं बोलते हैं, राइट. सो अगेन दैट पार्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट ओवर ईयर, जो कि कस्टमर सर्विस के एलिमेंट से भी हम देखते हैं कि हम कस्टमर को कभी ना नहीं बोलते हैं. वी से ओके, ये मैं नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं बताते हम सैंडविच मेथड यूज़ करते हैं, राइट. कि आई वुड लव टू डू इट फॉर यू बट आई हैव लिमिटेशंस, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर यू इंस्टेड, राइट. तो अगर आपको यहाँ पर ये बेसिकली सेंटेंसेस में अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो और आपको मना करना है, या फिर कोई आपको इनवाइट कर रहा है और आपको मना करना है, यू विल जस्ट से आई वुड लाइक टू बट आई हैव टू वर्क लेट और आई हैव टू डू समथिंग. तो आपको अगर क्लियर कट मना करना है तो यू विल जस्ट गिव अ रीज़न एंड यू विल फिनिश इट. बट इफ़ यू आर हैव अ जेन्युइन रीज़न एंड यू रियली डोंट वांट टू से नो बट यू हैव टू से नो बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, देन like second sentence में you can give another option over there. Okay, the way she or he said in the sentence, in the conversation basically, I would like to but I have to work late, why don't we go out tomorrow instead. That's how I can say the sentence after the yes and no वाला हमारा जो आंसर हम यहाँ पर दे रहे हैं. तो we are giving an alternate option over here. ओके, दैट्स ऑल्सो वन वे टू टैकल इट. कस्टमर सर्विस में हम थोड़ा सा सैंडविच मेथड बोलते हैं इसको, कि हम बोलते हैं कि आई वुड लव टू डू इट फॉर यू बट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर यू इंस्टेड. सो हम डायरेक्टली ना नहीं बोल रहे हैं बट ना बोल भी रहे हैं एंड हम ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं. तो जो कस्टमर है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्शन नहीं देगा बाय सेइंग कि ओके ऐसा कैसा आपका कंपनी है करके. ही विल से दैट ओके you can go, like you can come tomorrow for this work, then it's fine. Like why don't you come day after tomorrow instead. So he'll also give you his alternate option, as simple. Okay, now जो हमारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, अगेन दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. वुड यू लाइक टू डैश डैश करके हम सेंटेंस बनाते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस. वुड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब. अभी मॉडल वर्ब्स हमारे क्या रहते हैं? मॉडल वर्ब्स बेसिकली tell us the mood of the speaker, okay, whenever we use them, and also we use them to express desire, polite request and questions. Now जो हमारा would ये verb है in specific over here, it is mainly we can say it's a past tense form of will, but यहाँ पर हमें वो part नहीं observe करना है because अंडरस्टैंड दिस. मॉडल ऑक्सिलरीज हम आगे जाके भी देखेंगे बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड दिस. एक मॉडल ऑक्सिलरी ना 3-4 अलग अलग तरीके से यूज़ होता है. Okay, so for now understand we are just using it to make a polite request. ठीक है, don't get confused with all the other things written on the screen. That is what I'm trying to say. जब हम आगे model auxiliaries in depth देखेंगे तब I'll explain the other uses of would also. but अभी के लिए हम उसको सिर्फ polite request के लिए use कर रहे हैं. Yeah, now would you like to, अभी हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? क्या आप ये करना चाहोगे? ओके, क्या आप डिनर के लिए जाना चाहोगे? राइट. तो लाइक टू जो हमारा है, वी आर नॉट यूजिंग इट एज अ मेन वर्ब. ओके, लाइक इज जस्ट बीइंग यूज्ड टू मेक दैट सेंटेंस पोलाइट अगेन. या टू के बाद में जो हमारा वर्ब आएगा वो हमारा मेन वर्ब है. या अभी another rule that you need to understand over here is verb plus to plus verb. अभी जब भी हम सेंटेंस में दो verbs अगर यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो उनके बीच में ना हम टू इंसर्ट करते हैं टू मेक इट अगेन ग्रामेटिकली करेक्ट. या उसका और कुछ काम नहीं है. इट इज जस्ट देयर, द वर्ड टू इज जस्ट देयर टू मेक इट साउंड करेक्ट. ओके, वुड यू लाइक गो आउट थोड़ा सा ऑड साउंड करेगा, राइट. एंड ये जो टू है ना वो वर्ब के साथ में हमेशा रहता है. जैसे हम हिंदी वाले में वर्ब में देखते हैं ना कि बहुत बार एक है वर्ड रहता है वर्ब के आगे, राइट. तो वैसे ही हमारे टू वर्ब हमेशा वर्ब के पहले रहता है, टू ये वर्ड. बट उसको हम बहुत बार यूज़ नहीं करते हैं, जब नीडेड है तभी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर उसका नीड है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं. सो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा वो है वुड यू. यू क्योंकि हम इनवाइट कर रहे हैं तो सामने वाले को ही पूछ रहे हैं ऑफ कोर्स. सो सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा वुड के बाद में, फिर आएगा वर्ब जो कि है लाइक, वुड यू लाइक, फिर टू आ जाएगा एंड उसके बाद में जो हमारा मेन वर्ब है वो आएगा.
Okay, would you like to go out, would you like to eat dinner, would you like to have coffee, would you like to write down the notes, ऐसे करके हम पूछ सकते हैं. वुड यू लाइक टू सेटल डाउन, ऐसे करके हम पूछ सकते हैं इन ऑब्जेक्ट पार्ट इफ नीडेड. एंड सेम वे जैसे मैंने बताया आंसर देने के लिए भी हम यूज़ करेंगे आई वुड लाइक टू. अगर आंसर हमारा नो है तो आई विल स्टार्ट विद आई वुड. एपोस्ट्रॉफी डी जो है वहाँ पर वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वुड है. आई वुड लाइक टू कॉमा बट. एंड उसके बाद में आएगा हमारा हैव टू वर्क लेट, नीड टू सेव मनी, आई वॉन्ट टू विजिट माई पेरेंट्स. सो ये हमारे जो वर्ब्स है वो नेसेसिटी वाले वर्ब्स है हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज में. ओके, हैव टू, नीड टू एंड वांट टू. हैव टू मतलब क्या कि करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इफ आई से note it down and you say I'll write it down later, then I can say you have to write it down right now. right, मतलब करना पड़ेगा ही. राइट, सो वो वाला हैव यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया एक वर्ड के 3-4 मीनिंग होते हैं. यहाँ पर हम हैव एज अ मॉडल ऑक्सिलरी देख रहे हैं. अगेन हैव टू मतलब करना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा हैव कौन सा आता है जो हम हैव के लिए यूज करते हैं जो कि कंज्यूम करने के लिए. वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो वो ये हैव अलग है. ठीक है, और तीसरा हैव अलग आता है जो हम यूज करते हैं हमारे टेंस में. ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज. अगेन द वे आई सेड हैव टू मतलब करना पड़ेगा. ठीक है, इट इज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी ओवर हियर. नीड टू इट्स अ नेसेसिटी और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, वांट टू मतलब मेरी चाह है. आई वांट टू बाय एन आईफोन, तो वो मेरा चाह है. इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ कंपल्शन. क्लियर, ये तीनों में से एक हम यूज कर सकते हैं. एंड अगेन उसके बाद में हमारा मेन वर्ब आएगा. आई हैव टू वर्क लेट, आई नीड टू सेव मनी, आई वॉन्ट टू विजिट माई पेरेंट्स. ठीक है, एंड यस बोलना रहा तो सिंपल यस आई वुड और यस आई वुड लव टू, थैंक्स. ठीक है, क्लियर. हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं ऑलमोस्ट, और रूल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? नो, note it down quickly. Note it down, I'll be back in a minute. Okay. Sure.
Tell me once you're done. Done. Okay, next slide. Yeah, done. Done? Okay. Now try doing this exercise. Over here on the left hand side, you just have to give answers to the questions which are given. Okay? On the right hand side, the answers are given, you have to make questions. Okay. ठीक है? Try it. I'll give you 5 minutes.